Bismillah Rahman Rahim. This is lecture number 5. The name of the paper is Morphology and Syntax. The chapter is the chapter is Morphology and the subtopic is Roots and Affixes. This lecture is specifically for the students of BS third semester GDC PABI and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. We know that complex words they consist of more than one morpheme. We have understood the difference between simple morpheme and complex morpheme in the previous lectures, and we have studied that complex simple words and complex words, and we have discussed that complex words consist of more than one morpheme, two or more, and when this is the case, in the case of complex morpheme, if it has more than one morpheme, as complex words do, um, then one of them is referred to as the root. This is often the construction of such a complex word, that it has one root and one or more affixes. But what is then root? Root actually is the core of the word. This is the center of the word, and it is the major the component of its meaning. It is carried by the root. The major component of the meaning is carried by the root. So the first quality is that it is core of the word, or it is the central word. And secondly, that the major component of meaning is found in the root. And of course, it is a free morpheme because it can be a word by itself. The next quality is that it belongs often to lexical category, this root. The lexical category means that it is either a noun, verb, adjective, or a preposition. So these are these words, these parts of speech belong to lexical category, and as a result, we say that root belongs to the lexical category. So this is the explanation of root, that in complex words we have more than one morphemes. When this is the case, one of them is the root and one or more are the affixes. Root is the one which is the core of the word and which carries the major component of its meaning. That is, if we have to find out the meaning, we have to look to the root. And thirdly, that it belongs to the lexical category, that is noun, verb, adjective, or preposition. Root often belongs to these four. Um, Roots, therefore, are important, more important as compared with affixes, because affixes cannot stand alone and they are not central. They do not have the major component of meaning. Affixes, on the other hand, they do not belong to the lexical category. That is, they are not nouns, they are not adjectives, prepositions, and they are also not verbs. So they do not belong to lexical category, and these cannot stand on their own. They cannot work as word in itself. It cannot work as word in itself, and they are bound morphemes. They have to be attached to some other word, to the root, in order to give its meaning. The example is teach, for example. If we add er with it, it becomes teacher, which is a word, but a complex one, and it consists of two morphemes, teach and er. Teach is a verb,
and it is the root, while er is attached with it and it is a bound morpheme, converting this verb into the teacher, which is a noun. So teach here is root and er is that affix, actually suffix. We can express this information in the form of this diagram, which is called tree diagram. For example, you have teach and er. Teach is the verb, while er is the affix. Both of them combined together, teacher combined together, these two combined together make the noun, which is teacher. There is another example of un and kind. In this case, kind is the root, un is the prefix, also affix, and these two combined together make unkind, which is again an adjective. You have another example of the noun book, which is a noun, s, which is an affix, making this book, converting it into plural. Both of them combined together, books is a noun. Then you have a verb as a whole. Blacken is a verb, but black is an adjective. En is an affix. Combined together, blacken is a verb. Then you have another example of verb. For example, you have destroy, which is a verb. Ed with it, which makes it past, is an affix. Combined together, destroyed is a verb. So these diagrams are called tree diagrams, and in the discussion you need to make these tree diagrams to make the things easier to understand. इसको अब उर्दू में सुन लें. रूट्स और affixes दरअसल ये एनालाइजिंग वर्ड स्ट्रक्चर में आएंगे. वर्ड स्ट्रक्चर की एनालिसिस में सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि हम कंपोनेंट मार्फीम्स का जिक्र करें, बल्कि हमें इनकी क्लासिफिकेशन भी करनी चाहिए कि ये मुख्तलिफ किस्म के जो मार्फीम्स हैं ये क्लासिफाई करें और बताएं कि ये मीनिंग में क्या कंट्रीब्यूशन देते हैं और फंक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन देते हैं. तो इसमें से रूट्स और एफिक्सेस दोनों मार्फीम्स ही हैं, लेकिन रूट ऐसा मार्फीम है जो मीनिंग में ज़्यादा हेल्प करता है और ये कोर ऑफ द वर्ड यानी लफ्ज़ का मरकज़ी हिस्सा होता है और ये लेक्सिकल कैटेगरी से बिलोंग करता है. लेक्सिकल कैटेगरी से मुराद ये है कि ये नाउन होगा, वर्ब, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन होगा. इसी तरीके से एफिक्सेस ये भी मार्फीम है, लेकिन ये लेक्सिकल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते और ये अलग से लफ्ज़ का काम भी नहीं कर सकते और ये हमेशा बाउंड होते हैं, बाउंड मार्फीम्स हैं और ये और अल्फाज के साथ मिल के लफ्ज़ बनाते हैं. मसलन अगर हम टीच ले लें जो कि वर्ब है, ये जब ई आर से मिलता है जो कि एफिक्स है, ये वर्ब है, ये एफिक्स है, तो दोनों मिल के एक नाउन बनाते हैं टीचर. इसी तरीके और ये ट्री डायग्राम कहलाता है. इसी तरीके से अन और काइंड मिलते हैं. इसमें काइंड ये रूट है, ये अन एफिक्स के साथ मिलता है, दोनों मिलके अनकाइंड बनाते हैं जो कि फिर एक एडजेक्टिव है. बुक और एस मिलते हैं, बुक नाउन है, एस एफिक्स है, दोनों मिलकर बुक्स बनाते हैं, ये भी नाउन है. ब्लैक एडजेक्टिव है, ई एन एफिक्स है, दोनों मिलके ब्लैकन बनाते हैं जो कि बी एफिक्स वर्ब है. डिस्ट्रॉय और ईडी मिलके डिस्ट्रॉयड बनाते हैं, डिस्ट्रॉय वर्ब है, ईडी एफिक्स है, पास्ट बनाने के लिए ईडी इस्तेमाल करते हैं और ये वर्ब बनाता है डिस्ट्रॉयड और इसको ट्री डायग्राम्स भी कहा जाता है. इसको रीड कर लेते हैं. कॉम्प्लेक्स वर्ड्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए रूट. कॉम्प्लेक्स वर्ड अमूमन रूट, मार्फीम एंड वन और मोर एफिक्सेस पर मुश्तमिल होता है. द रूट कॉन्स्टिट्यूट्स द कोर ऑफ द वर्ड. रूट
लफ्ज़ का मरकजी हिस्सा है एंड कैरीज द मेजर कंपोनेंट ऑफ इट्स मीनिंग, और ये मीनिंग का बड़ा हिस्सा रखता है अपने अंदर। रूट्स टिपिकली बिलोंग टू लेक्सिकल कैटेगरी, ये लेक्सिकल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और लेक्सिकल कैटेगरी से मुराद ये है कि ये या नाउन होंगे, वर्ब होंगे, एडजेक्टिव होंगे या प्रीपोजिशंस होंगे। अनलाइक रूट्स के बरक्स affixes do not belong to a lexical category, ये लेक्सिकल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, एंड आर ऑलवेज बाउंड मॉर्फीम्स, और ये बाउंड होते हैं, अलग से लफ्ज भी नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल द affix er is a bound morpheme, ये बाउंड है, that combines with a verb such as teach के साथ मिलता है, giving a noun with the meaning one who teaches, और मीनिंग हमें देता है वो जो टीच करता है। The internal structure of this word can be represented in figure 4.1, इस फिगर में आप देखिए तो हम इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, टीच वर्ब है, er affix है, मिलकर टीचर ये नाउन है, और इसी तरीके से ये हमने डिस्कस किया, ये डिस्कस किया, ये डिस्कस किया। The structural diagram in figure 4.1.2 ये ऊपर are often called trees, या इसको ट्री डायग्राम भी कहते हैं। इसका दूसरा तरीका ब्रैकेटिंग का है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन और समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ट्री डायग्राम से काम लें। Where the details of a word structure are irrelevant, अगर ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत ना हो, to the point being considered, जो नुक्ता एक्सप्लेन करना है उसके लिए, traditional to use a much simpler system of representation, तो एक सादा सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, that indicates only the location of the morpheme boundaries, उससे हमें morpheme boundary का पता चलता है, जैसे unkind, तो सादा तरीका बीच में हाइफन लगा दिया, book और s हाइफन बीच में, and so on। तो ये एक मुख्तसर सा लेक्चर हुआ और हमने इसमें रूट्स और एफिक्सेस को पढ़ा। रूट्स भी मार्फीम है, एफिक्सेस भी मार्फीम है। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में चूंकि मार्फीम एक से ज़्यादा होते हैं तो इसमें एक कम से कम रूट होता है, बाकी एफिक्सेस यानी प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हो सकती हैं। रूट की पहचान ये है कि ये लफ्ज़ का मरकजी हिस्सा होता है, बड़ा हिस्सा होता है, मेजर कंपोनेंट ऑफ इट्स मीनिंग होता है, और ये लेक्सिकल कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव वगैरह से। और इस तरीके से एफिक्स हैं जो कि लेक्सिकल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते। थैंक यू एंड गुड लक।